Hey guys, Swap here. So let's have a quick recap of the trigeminal nerve. So trigeminal nerve basically divide होती है तीन divisions में, that is ophthalmic nerve, maxillary nerve and mandibular nerve. So let's begin with the ophthalmic nerve. So ophthalmic nerve basically arise होती है lateral surface of cavernous sinus. अब lateral surface of cavernous sinus तो जाती है superior orbital fissure से. Superior orbital fissure से basically तीन branches जाती हैं, उसकी frontal branch, nasociliary branch and lacrimal branch. Frontal branch goes to supplies to supratrochlear and supraorbital. Nasociliary branch gives supply to anterior ethmoidal, posterior ethmoidal, infratrochlear, longitudinal ciliary and nerve of ganglion, and the lacrimal branch gives supplies to the lacrimal gland. This we have done with the ophthalmic nerve. So now talking about the maxillary nerve. So what's the maxillary nerve? Basically maxillary nerve जाती है lateral wall of cavernous sinus को, then it goes to the foramen rotundum, and it is medial cranial fossa, foramen rotundum, it is present in medial cranial fossa, and then it's applied to the meninges. And another, the maxillary nerve also goes to the pterygopalatine fossa. pterygopalatine fossa वहाँ से जाती है posterior superior alveolar को, और posterior superior alveolar basically supply करती है premolars को, तो सॉरी posterior superior alveolar supply करती है हमारे molars को. एंड देन उससे एक और ब्रांचेस अराए होती है, दैट इज inferior orbital fissure को जाती है जो, और वहाँ से वो जाती है हम zygomaticofascial and zygomatic को. And another division of maxillary nerve which goes to the three branches, these are the three terminal branches, that is superior palpebral, lateral wall of nose and external labialis को जाती है. एंड अनादर ब्रांच आती है उसकी inferior orbital grooves को, जो सप्लाई करती है मीडियन सुपीरियर एल्वियोलर को. मीडियन सुपीरियर एल्वियोलर सप्लाई करता है प्रीमोलर्स को, एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर हमारे सप्लाई करता है इंसिजर्स एंड कैनाइन, दैट इज एंटीरियर टीथ को. So this we have done with the maxillary nerve. Now come to the next nerve, which is the last nerve division in the trigeminal nerve, that is mandibular nerve. So what's the mandibular nerve basically? So basically mandibular nerve, the course of mandibular nerve is as follows. First of all, it begins from the foramen ovale, which is present in the middle cranial fossa. It arises from foramen ovale, then it goes to the main trunk. Main trunk से फिर वो जाती है सप्लाई करती है meninges को, medial pterygoid, टेंसर वेला पैलेटिनी एंड टेंसर टिम्पेनाई. अनदर मेन ट्रंक के बाद उसके दो डिवीजन और होते हैं, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन. एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व सप्लाइज टू मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, दैट इज मैसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगोइड एंड लेटरल टेरिगोइड, प्लस बक्सिनेटर ऑल्सो. And posterior division supplies to auriculotemporal nerve. Auriculotemporal, which we know very well, it arises from the parotid gland. Auriculotemporal nerve, lingual nerve, which is a further extension of the choroid tympani nerve, inferior alveolar nerve, nerve to anterior belly of digastric, and mylohyoid nerve. So this one is we done with the mandibular nerve and all the subdivisions of the trigeminal nerve. Bye bye. See you in the next video.